Okay, guys, let's move to our next lecture for today. That is, what do you want from me? Okay, so in this session, we are going to discuss that what are the criterias based on which you are going to mark in IELTS examination, या फिर आपको क्या चीज़ें करनी है in order to impress the examiners. वो हम बहुत ही डिटेल में आज पढ़ेंगे. So without wasting any time, let's begin. So first of all, these are the 4 criteria that you need to work in order to achieve your desired band scores in writing task 1. So first one is task achievement. Okay, this is task achievement. So here first very important thing you need to keep in mind is minimum 150 words you need to write. ठीक है, इससे कम नहीं लिखना है, otherwise your task achievement will not be done. आपने word limit नहीं देखी and task response नहीं होगा. So in order to work on task response, 150 words is must. And then second thing is whatever question is asked to you, जैसे उन्होंने पाई चार्ट दिया, डायग्राम बेस्ड क्वेश्चन दिया, एनी सॉर्ट ऑफ क्वेश्चन, उसको करेक्टली एड्रेस करना है. ओके, द इंफॉर्मेशन दैट यू आर राइटिंग इट शुड बी करेक्ट. सो दैट इज ऑल्सो कम्स अंडर टास्क अचीवमेंट. Okay, let's move to the second one, that is coherence and cohesion. Coherence and cohesion means narration of the story. Okay, whatever you are trying to tell, step by step it should be represented correctly. मतलब अगर आप कोई भी ट्रेंड बता रहे हो, इंक्रीजिंग वाला, डिक्रीजिंग का, so it should be arranged in a manner so that the clear representation should be done. So coherence and cohesion is the second criteria. Third one is lexical resource. Lexical resource means correct usage of vocabulary. Okay, you should know relevant vocabulary in order to get full task response. ठीक है, फॉर राइटिंग टास्क 1. जैसे कि इंक्रीजिंग के लिए आप कौन से वर्ड्स यूज कर सकते हो, लाइक इंक्लाइनिंग, ग्रोइंग, लाइक दैट. तो वो हम डिटेल में डिस्कस करेंगे एंड दैट सेशन इज रियली वेरी इंपॉर्टेंट. एंड द नेक्स्ट वन इज ग्रामेटिकल रेंज एंड एक्यूरेसी. सो दिस वन ऑल्सो, इसके लिए मैंने एक बहुत ही अलग सेशन बनाया वेयर आई विल बी डिस्कसिंग अबाउट सिंपल सेंटेंस, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड. एक्चुअली क्या होता है, द एग्जामिनर्स दे आर looking for range in your writing. It's not like आप सिर्फ simple sentences लिख रहे हो. You should know how to use complex sentences और वो accurately लिखना, that is very important. So that also we will look. Let's move to the next one, that is task achievement. So in this exam, first of all, according to the official IELTS writing band descriptors, to achieve 7 आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है is cover the requirements of the task, present a clear overview of main trends, differences or stages, clearly present and highlight key features. Okay, overview और ट्रेंड्स, डिफरेंसेस, सब कुछ बहुत ही क्लियरली आपको लिखना है. ओके, इन अदर वर्ड्स यू कैन से राइट अबाउट एवरीथिंग इन द क्वेश्चन, राइट एन ओवरव्यू इन विच द ट्रेंड्स और इम्पोर्टेंट डिफरेंस इन द आर क्लियरली डिमॉन्स्ट्रेटेड. सो डिफरेंसेस भी बताने हैं आपको. Along with that, जो important increasing और decreasing trend, if it's a line graph तो उसमें क्या बताने हैं, अगर process chart है तो उसमें कौन सी stages हैं, steps हैं in overview part that you need to clearly demonstrate. Okay, तो वो represent clearly करना so that it will be easy for the examiner to read whatever you are writing. That is very important and that is task achievement. नाउ कोहेरेंस एंड कोहेजन. अब देखिए, कोहेरेंस एंड कोहेजन जैसे मैंने बताया, लॉजिकली ऑर्गेनाइज इंफॉर्मेशन
and ideas, clear progression throughout. Okay, and use a range of cohesive device appropriately. अब ये कैसे होगा? तो हमेशा याद रखिए लॉजिकल ऑर्डर में होना चाहिए आपका रिस्पॉन्स. लाइक पहले आप इंट्रो लिखेंगे, फिर ओवरव्यू लिखेंगे, एंड देन बॉडी पैरा 1 बॉडी पैरा 2, तो वो जो डिटेल्स है आपके ग्राफ की. ओके, सो लिंक सेंटेंसेस एंड पैराग्राफ विद वर्ड्स. लाइक आप सेंटेंसेस को लिंकिंग वर्ड्स की थ्रू जो स्टेजेस हैं और जितने भी पैराग्राफ हैं उनको रिप्रेजेंट करेंगे, लाइक बाय यूजिंग द लिंकिंग वर्ड, हाउएवर, देयरफॉर, फर्दरमोर, ये सारे लिंकिंग वर्ड्स को लिंक करके स्टेजेस को you need to present. Okay, linking words are important because it makes the sentence complex, और उसके बारे में और डिटेल में we will discuss in the upcoming sessions. Okay, try to also link stages together with at this point following this having plus past participle. This is also a range. Okay, when you are writing, तो ये भी grammatical range में आ जाता है. सो कोहेसिव डिवाइसेस आर वेरी इंपॉर्टेंट. जैसे आप नेक्स्ट स्टेज की बात कर रहे हो तो देन यू कैन यूज द वर्ड्स लाइक फॉलोइंग दैट. ओके, लाइक दिस यू कैन यूज फॉलोइंग दैट, और यू कैन यूज लेटर, है ना. This is how you should write so that you know it will be easy for the examiner to get to know what you intend to say, कि मतलब इस स्टेप के बाद अब ये होगा या ये हुआ. Okay, next one, lexical resource. As I have mentioned, these are correct vocabulary, and use a sufficient range of vocabulary to allow some flexibility and precision. Use less common lexical items with some awareness of style and collocation. May produce occasional errors in word choice, spelling, word formation. अब देखिए इसमें क्या होगा, ये यूज करेंगे some synonyms, paraphrase. Okay, जैसे for instance the word will come advertisements. Okay, इन्होंने यूज कर लिया word advertisement इन क्वेश्चन. ठीक है, अब बताइए इस वर्ड के अलावा लाइक व्हाट अदर लेक्सिकल रिसोर्स यू कैन यूज. yes, you can use promotions, commercials, adverts, right? So always do remember that you are not going to repeat any word again and again. Instead of that, use some precise vocabularies to present your ideas. Next, use less common words and phrases and show that you know how these words fit together. That means collocations. Okay, तो इसमें क्या होगा, अब देखिए this person is working. You have written this sentence, this person is working. Now you are using some collocation, that means the words that fit together. This person is actively working, right? So this is how we write. We show the examiner that we correctly know how to use words. Okay, so this is how you are going to use correct range of vocabulary by making fewer mistakes. Okay, next, grammatical range and accuracy. Use a variety of complex structures, produce frequent error-free sentences, having good control of grammar and punctuation. Okay, with few errors. So here what you can say, you need to use simple sentences, complex sentences also. Avoid making mistake in the majority of the sentence, more than 50%. तो इधर क्या करना है आपको mistakes होने से avoid करना है कि when you are making some complex sentences, so you need to see that you are not making any mistakes. Use commas, semicolons, okay, and try that you do no mistakes in grammar when you are writing it. Okay,
Okay, so this is the summary of what we have discussed. First, we discussed about task achievement. In this, we have covered that the task that you have written, it should cover all task requirements. It should present a clear overview. Okay, overview means highlighting the key points of the graph or chart. Then identify key features of the graph. Okay, the important points you need to identify. Present these key features clearly and accurately. जो भी आपके key features हैं उनको clearly you need to mention. So this is about task achievement that we have discussed. Next one is coherence and cohesion. Order your response logically. आप जो भी लिख रहे हो, वट एवर यू आर प्रेजेंटिंग, उसको एक ऑर्डर में अरेंज करो. लाइक इंक्रीजिंग थिंग्स इफ यू आर राइटिंग, तो उसको पहले यू राइट इट, अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर लो. देन यू कम टू द डिक्रीजिंग पार्ट, और उसके बाद भी अगर कोई ऐसी चीज़ें हैं जो सेम हैं, देन यू राइट देयर. अगर आप कोई डिफरेंस भी बना रहे हो कि देयर इज सम डिफरेंस इन बोथ द टास्क, तो you need to mention. It should not be like you are jumping from one point to another. There is no end, है ना. तो इसके लिए क्या हो जाएगा, एग्जामिनर बहुत कंफ्यूज हो जाएगा. ही इज नॉट गोइंग टू गेट व्हाट यू आर ट्राइंग टू से. सो बेटर इसको बहुत ही कोहेसिव तरीके से लिखिए बाय यूजिंग लिंकिंग वर्ड्स लाइक फर्दर मोर, दिस हैपेंड, मोर ओवर, दिस वॉज ऑल्सो देयर, है ना. तो कोहेसिव डिवाइसेस की हेल्प से स्टेप बाय स्टेप सारे आइडियाज रिप्रेजेंट करते चले जाएंगे. सो लिंक सेंटेंस एंड पैराग्राफ टुगेदर विथ कोहेसिव डिवाइसेस. एज आई हैव मेंशन्ड, फर्दर मोर, लेटर ऑन, ऑल दीज यू कैन यूज. लिंक स्टेज विद एप्रोप्रिएट लैंग्वेज. सारी स्टेजेस को एप्रोप्रिएट लैंग्वेज से आपको रिप्रेजेंट करना है. देन स्टे फोकस. हर चीज में यू नीड टू बी फोकस when you are presenting ideas. इंक्रीजिंग के कौन से ट्रेंड्स हैं, डिक्रीजिंग के कौन से ट्रेंड्स हैं, या फिर ग्राफ है तो कौन से स्टेप पे हैं आप, दैट यू हैव टू मेक श्योर. नेक्स्ट कम द लेक्सिकल रिसोर्सेज. लेक्सिकल रिसोर्स मीन्स वाइड रेंज ऑफ वोकैबुलरी. देन बी प्रिसाइज विद लैंग्वेज. आपको पता होना चाहिए जो वोकैबुलरी आप डाल रहे हो, जो लिख रहे हो वोकैबुलरी, इट इज करेक्ट और नॉट. आप सही जगह पे यूज कर रहे हो कि नहीं. ओके, दैट इज इंपॉर्टेंट. यूज लेस कॉमन वर्ड्स, फ्रेजेस, शो collocations. Okay, that means less common in the word. What they are trying to say is जो इन्होंने vocabulary use करी है, instead of that you try to come up with another one. It will give good impression to the examiner. Definitely आप खुद सोचिए, अगर कोई word already question में लिखा हुआ है and you are using that word 10 times in your essay, task 1 और task 2, तो वो it is not going to give good impression. Instead of that अगर आप कोई और word लेकर के आते हो, for instance अगर कहीं पे लिखा है describe a good service you received from a restaurant, the word service here, okay, service, okay, this question is asked to you, the examiner asked describe a service you received in a restaurant. So are you going to say the service that I received was good, the service I really liked, the waiter service was also good, the waiter was doing good service? No, it is not at all looking good. Instead of that, what you can say, the amenities provided by the hotel were really nice. I really liked the facilities provided by them, especially I really like the living area, the amenities, I really enjoyed there. Okay, so what words I have used? I have used facilities, amenities, you know, the hospitality you can also use. This is how it is done. So you should know how to use them accurately. So this is another one. And finally, grammatical range and accuracy. That means correct usage of grammar. So show a range of grammar, simple and complex. So you should use simple sentence also, complex sentence. Simple sentence क्या होता है? Simple sentence means a sentence having a subject and a predicate, but complex में अगर हमें बनाना है तो we need
to use some linking words in order to make them complex. Okay, that we will discuss in another session in detail. Don't make too many grammatical mistakes. थोड़ी बहुत mistakes grammar की examiners also they ignore, but अगर आप बहुत ज़्यादा mistakes करो और यहाँ पर grammatical range में आपके marks कट जाएंगे. Use punctuation accurately. अब देखिए comma, semicolon ये सब use करना है. 50% सेंटेंस एक्यूरेसी, और आपको सारे सेंटेंसेस जो हैं उनको सही लिखना है ग्रामेटिकली ऑल्सो, एंड रेंज शुड ऑल्सो बी करेक्ट. ओके, लेट्स मूव टू नेक्स्ट वन नाउ.